Hello everyone, good afternoon and good morning also. So we are very near about our all prelims exam. We are aware about that. We have a 17th March. We have a JPSC prelims exam, then after UPSC prelims exam, and many more like UPPCS or some others exam BPSC, right? So for all exams, the current affairs is a very important thing, right? So in the point of based on the demand of these things regarding the prelims paper, we are going to cover the entire current affairs subject wise, right? And what I found that we have a PT365 which is released by the Vision IAS, and this PT365 material is a complete combined solution for you. You can get the entire solution in a one book or in a one booklet, right? This available on the soft copy in this format, and it's available on the offline or like in a hard copy, right? So you can purchase this hard copy in any bookstore, okay? Or if you want, you can purchase it from the Vision IS also. Uh, but you can also order it through the Amazon, right? Who are not residing in Delhi or not moving outside. So in this case, you can order it from the Amazon hard copy. But we have a solution. We can go through it with the online, right? Like we can download the soft copy, and I'm going to cover the entire PT365 with you. If you don't want to purchase or download or anything or order, don't worry, we are going to cover the entire PT365 in this video lectures, and here we are going subject wise because a PT365 we get in the subject wise manner. So first we are taking the environment. Why environment? Because environment quoted a means 80% contribution in the prelims exam. How? See, in the this prelims exam is a one prelims exam for the IFS student and IPS and IAS of students, right? Like for civil services and the forest services, the both exam is combined in one prelims, right? So in this prelims exam, you are getting that benefits because IFS student is also giving this prelims exam, right? So for the civil services student, this is a very beneficial thing for you that you are getting at least 18 to 20 questions from the environment only. Why? Because the forest student is also giving that prelims only. So for them, they are going to set that 18 to 20 question of the environment. Okay, so that's why environment is play a very vital role in prelims exam paper. Okay, so we are started with the environment, then we will move to according to the subject wise and according to the which subjects material is available on the Vision portal. Okay, so now there is a three subjects already released, that is environment, polity, and economics. So first we finish this environment, then we will move to the economics, and then we will start the polity, because I think that polity is a little bit easier than economics for the student. But for me, economics is more easier. Okay, just a point. Come to the point. Let's move to the environment. Okay, so this is the PT65 series, and we are trying to complete the entire subject with this video lecture. Okay, so let's start. This is environment, and this PT365 cover from the April 2023 to December 2023, right? Then after you will get one more PT365 which covered January 24 to May 24, right? In this manner. But first you have to finish this thing. And how we can read this one, this complete booklet, because if you see that why I'm saying that booklet, because in this booklet you will get the 141 pages only. So if you want to divide it, you can divide easily, right? So you can try to cover the 50 pages in one day. Like this way you can divide this booklet and you can try to cover it. Okay, but how I can cover it, you can see that if you get the idea, you can do others paper alone, otherwise you can do it through the video. So see, table of content, what's the news inside this booklet regarding regarding the environment subject. First is the climate change, and we are aware about the global scenario. So in this climate change, the topic is climate change. Under the climate change, we are going to cover about the global scenario. Under the global scenario, we are going to know about the ozone hole, state of the cryosphere 2023, right? So this one. Thereafter, second is international conference, convention, and initiative. We are aware about the COP28, India COP. What is the contribution of India in COP28? What is the national determined contribution?
guidance of the children rights environment, and other initiative in the news regarding the conference, convention, and initiative. And one thing I will tell you that if you are aware about the history of the conference, like when it has happened in 1992, when it happened in the Rio de Janeiro, right? In the Rio de Janeiro, there we can see that we can get the three things. One is UNFCCC, that is climate change related topic under this UNFCCC. One is CBD, and another is UNCD, desertification related thing, right? So in CBD, we are getting two things. One is Nagoya Protocol, second is Kyoto Protocol, right? So definitely, if you are aware about these all things, so in COP28 you are able to understand perfectly. Okay. Then come to the climate mitigation and adaptation. Here we are going to cover in this climate mitigation and adaptation, that is carbon credit trading schemes. And this is a very important thing because from the 2018 we have seen about this carbon credits, and nowadays it is very important for the developing country, right? So we are going to understand that also what is the carbon credit. Okay. Then mission life, LIFE. What is the full form of the life? You can tell me on the comment box, or we are going to learn also, right? Carbon border adjustment mechanism is very important thing, and it's repeated also. Depth of the climate swap, reduction of the greenhouse emission, national framework of the climate service. Other climate related news and trends, we are also going to see that in here. Second part is pollution, third part is biodiversity, and if we see that there is any other part, fourth part is fourth topic in this is sustainable development. What is the sustainable development? If you are aware about the sustainable development, right? Satat development. So you are able to cover this easily, right? And in the fifth, we are going to learn about know about the disaster management, and the last topic is related to geography. Okay, so this is all about the topics. Let's start from the first, and the first news is related to climate change, right? See, the climate change. Under the climate change, first you have to try to understand that ozone layer depletion. What is the ozone layer depletion, right? See, just remember the three things. One is CFC, chlorofluoro, HCFC, chlorofluorescent, halogens, methyl bromide, right? So, this this is the depletion chemical, right? When we say that ozone layer depletion, so how it has happened? It's happened through this chemicals. What is the chemical? Chlorofluorescent, hydrochlorofluorescent, halogens, and methyl bromide. Okay, these are the chemicals which depletes the ozone layer. Ultraviolet ray is split in the chlorine atom away from the chlorofluorocarbon molecules. Okay, and the chlorine atom breaks up on the ozone molecules, making a hole in the ozone layer. And the molecule left behind are chronic monoxide and oxygen. So this is the process how this depletion is happened, right? So here is all given, and the chemical name is very important regarding the ozone layer depletion. So what has happened? A global scenario is talking about the ozone hole. Our first topic is ozone hole. First, we have to learn why it is in news. This is very important thing. Why it is in news? How we know that? So as per the recent study from 20 to 22, ozone hole has grown layer and thinner over Antarctica. Okay. So about ozone layer and the ozone hole. Just know about the ozone layer and ozone hole. So thin shield of the gas in Earth stratosphere absorb the sun ultraviolet ray. Nearly 90% of the Earth ozone reside in the stratosphere. Okay. Ozone hole क्या है? So reason of the exceptionally depleted ozone in the stratosphere over the Atlantic and Arctic. It denotes area where ozone level drop below 220 Dobson unit. ठीक है, अगर कितना डिप्लीट हो रहा है उसको हम किस तरीके से किस यूनिट से मेजर करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डॉप्शन. ठीक है, एवरेज थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ओवर द अर्थ कितना होना चाहिए? 300 डॉप्शन यूनिट, बट नाउ हाउ इट इज 220.
ठीक है। सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस अगर हम कहते हैं क्या है, तो उसको समझेंगे ह्यूमन मेड गैसेस दैट रिच stratosphere and repeatedly break apart ozone molecules. Okay, a process known as the catalytic cycle. Okay, a process complete. The entire process is known as the catalytic cycle. Just remember this keyword. This is very important keyword regarding this thing. So a sequence of chemical reaction in the form of a loop. Okay, and resulting the destruction of the ozone. And entire this process is called the catalytic cycle. Just remember this keyword. Okay. What is the major ozone depleting substances in this process? So major depleting substances is chlorine, bromine, chlorofluorocarbon, carbon tetrachloride and halon. So just remember this name because अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ये आपके जो नेम है ये ऑप्शन के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो इनको आपको याद रखना है। नाउ व्हाट इज द स्टेटस? ओजोन लेयर ऑन ट्रैक टू रिकवर विद इन अ 4 डिकेड्स। सो यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये स्टेटस आया है, ठीक है। तो यूएनईपी ये आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट आ सकता है और क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके थ्रू है, तो यूएनईपी के थ्रू ये स्टेटस आया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्राइवर ऑफ ओजोन लेयर ओवर द अंटार्कटिका? तो उसमें क्या होना चाहिए? चेंजेस अंटार्कटिका पोलर वर्टेक्स में क्या क्या हुआ है? Polar vertex are stratospheric wind pattern with a fast swirl of low pressure and a very cold air, more pronounced over the South Pole and leads to formation of the polar stratospheric cloud. And this cloud, also known as the nacreous cloud or mother of pearl, are formed below the minus 78 degrees Celsius and trap can destroy the ozone, sorry, and trap outgoing long wave radiation. क्या ट्रैप करती है? आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये ट्रैप करती है। So can destroy ozone by कैसे destroy हो रही है? Providing a surface that convert begin form of the chloride in into reactive ozone destroying form and removing the nitrogen compound that moderate the destructive impact of the chloride. Changes in solar cycle increase the atmospheric abundance in the chlorofluorocarbon. ठीक है? See, कुछ रिलेटेड इससे बातें हैं जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन ऑन ओजोन लेयर। ये भी कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो वॉल्केनिक इरप्शन इसके भी कुछ इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे ओजोन लेयर पे। क्या? एज पर द रिसेंट स्टडी इरप्शन ऑफ हुंगा टोंगा हुंगा हैपपीला वैल्केनो, ठीक है, नाम याद रखना है। और ये रिसेंट इरप्शन इसमें हुआ है, क्या नाम है इसका? हुंगा टोंगा हुंगा Hapai volcano may have a potential impact in ozone layer. So Honga Tonga Honga Hapala Hapai is a submarine volcano in a Tongan archipelago located in the southern Pacific Ocean that erupted in January 2022. अगर if we are see that recent का क्या है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। Just give me 1 minute guys. Okay, so we are here that related to impact of the volcanic eruption on the ozone layer. Sometime it's happened. Some volcanic eruption is also interrupt the or give the impact to the ozone layer, right? So this is the one more reason, or we can say that one one is the one more phenomena which can affect the ozone layer, that is the volcanic eruption. And if the question is related to the recent active volcano, so just remember that which is the Honga Tonga Honga Hapai is the submarine volcano which recently is erupted on January 2022, right? So this is the thing. Okay. Earlier in 1991, eruption of Mount Pinatubo in the Philippines potentially lead to significant the ozone loss in the stratosphere. Okay. So if you want to see how it has happened, impact, what is the impact of the volcanic eruption on ozone layer, if the question is like that. So if you get the option in this manner, so this all 4 option is correct, right? Or if you want to write in a mains answer, you can write this all 4 points. It will give you the good marks. Okay. So impact of the volcanic eruption on ozone layer. First, it triggered the massive stratosphere water
Vapor plume inject the large quantity of sulfur dioxide, conversion of the chlorine, making it more. Third is contribute atmospheric bromine and hydrogen chloride. And last one is eruption particle, provide the surface for the chemical reaction for ODS. Okay, ozone depletion substances. Right. So this is we understand about the 4 points regarding the impact of the volcanic eruption on ozone layer. Now move to the next topic, that is the Montreal Protocol. Right. So what is the history of Montreal Protocol? And it's come from the UNDP. What is this UNDP? It is United Nations Development Program. Right. So under this Montreal Protocol targets set by the Ministry of Environment and the United Nations Development Program (UNDP). Okay, so learn what is this Montreal Protocol. Basically, क्या हुआ है Montreal Protocol में, होता क्या है या क्या था, कैसे क्यों आया, कैसे आया? तो बेसिकली जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा था, तो ओजोन डिप्लीशन में पाया गया कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसकी वजह से ज्यादा डिप्लीशन हो रहा है। तो इंटायर टीम ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे डिप्लीशन थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो एलिमिनेट किया गया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को और उसके जगह किसको लाया गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब उसमें भी वो दिक्कत होने लगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट किया गया तो फिर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लाया गया, तो उसमें भी दिक्कत आने लग गई। तो जब फेज आउट, तब फिर क्या बोला गया? फिर से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फिर से रिवाइज किया गया और बोला गया कि अब हम फेज आउट करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी फेज आउट करके हम क्या करेंगे? वी आर ट्राइंग टू एड सम डिफरेंट स्टेजेस, राइट? तो यही सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप समझ जाओ, की पॉइंट्स को हमेशा याद रखो। जब भी किसी प्रोटोकॉल को या किसी भी कॉन्फ्रेंस को आप पढ़ रहे हो तो उसका की पॉइंट याद रहना चाहिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दो कीवर्ड आप याद रखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। जहां भी फेज आउट करने की बात हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को, जहां भी फेज आउट की बात होती है तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, दिस इज रिलेटेड टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। राइट, तो ये दो बातें याद रखो, बाकी स्टोरी आपको यहाँ मिल जाएगी। राइट, ओके। क्यों न्यूज में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? फिर से न्यूज में क्यों आया? डेफिनेटली कुछ फेज आउट की बात की गई होगी। ठीक है, तो इसका जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज कर रहा है? वो रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड यूएनडीपी, सॉरी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए। सो आगे देखते हैं। इंडिया सरपासेस द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट। सरपास कर चुका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स को इंडिया, एंड स्टेज बाय report by Ministry of Environment and UNDP. Okay. So about India's achievement under the Montreal Protocol, ये अच्छी बात है। So क्या achievement है देखा जाए? Exceeded the 35% हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट गोल हमने अचीव कर लिए हैं। ठीक है, कितने परसेंट? 35, याद रखिएगा। 44 रिडक्शन अचीव थ्रू द 2020 बेसलाइन पे ही हमने इतने कर लिए थे। एलिमिनेट हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 414B. So hydrofluorocarbons are employed as a refrigerant in the production of the new equipment, and this carbon 414B is used as the blowing agent in production of right polyurethane foam. ठीक है, so will also phase out of हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन in new equipment manufacturing completely by the कब हो जाएगा? 2020 दिसंबर 2024 का टारगेट है। And we are ahead of the Montreal Protocol schedule 2020-30. Our achievement of India is implementation of Montreal Protocol, phase out chlorofluorocarbon, carbon tetrachloride, halogens, etc. for the controlled uses. Hydrofluorocarbon phase out management plan stage 2 is currently under implementation from 2017 to till 2024. An India Cooling Action Plan, that is called ICA, ICAP, that is ICAP, India Cooling Action Plan, aims at reduction cooling demand, refrigerant transition, enhancing the energy efficiency, and adopting the better technology option by 2037 to 2038. ठीक है, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो। चलिए, अभी तो जो मैंने आपको बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कैसे याद रखेंगे, तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987,
इम्प्लीमेंटिंग अंडर किसके थ्रू, वियना कन्वेंशन अडॉप्टेड इन 1985। ठीक है। a global environment a global environment treaty to eliminate the production and use of ozone depleting substance. Signatory, first universally ratified treaty of UN. Okay. World Ozone Day celebrated each year to commemorate its signing. Kigali Amendment Montreal Protocol was adopted in 2016 to phase down production and consumption of hydrochlorofluorocarbon. So hydrochlorofluorocarbon are non-ODS alternatives to CFC and HCFC, but their global warming potential is thousands of times that of carbon dioxide. And it divides nation into three groups with a four-step path to achieve the 80% reduction in hydrofluorocarbon consumption in 2047. So India और Montreal Protocol का अगर हम देखें तो become a party to the Vietnam Convention एंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1992। वियतनाम कन्वेंशन को हमने कब ज्वाइन किया, 1991 में, और 1992 में हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हिस्सा लिया। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन कौन है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, मॉप्सी है। Refined Kigali Amendment in 2021. Under it, India will complete its phase down of hydrofluorocarbon in 4 steps from 2032 onwards, with cumulative reduction of 10% in 2032, 20% in 2037, and 2040 to 88, 50% in 2047. Right. So entire information is given here in this article, in this particular article. But what you know that how we can learn all this means we have a lot of protocol, right? सबको याद करना it's a very difficult task sometime. So what we will do, क्योंकि कुछ जब प्रेशर बना रहता है कि प्रीलिम्स नियर है, काफी पास है हमारे, उस केस में बहुत सारी चीजें मगअप होने लग जाती है। तो उस केस में जब आपको ऐसा लगे, व्हाट यू डू दैट, जस्ट ट्राई टू लर्न इट थ्रू द फ्यू कीवर्ड्स लाइक, आपको मैंने जस्ट बताया कि फेज आउट करने की जहां बात होती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, तो डायरेक्टली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड ये टर्म्स होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, स्टेट ऑफ द क्रायोस्फेयर। तो स्टेट ऑफ द क्रायोस्फेयर क्या है, क्यों न्यूज में, पहले वो देखते हैं। देखो क्रायोस्फेयर है क्या, ठीक है। यहाँ देखो, आप देख रहे हो ये आइस कैप है और ये स्नो, ये धीरे धीरे पिघल रहा है। ठीक है। सो लेक एंड रिवर आइस यहाँ आ रहा है, ये परमा फॉरेस्ट आपको दिख रहा है, ये लैंड है, ये सी है, राइट। सो ये आइस बर्ग है, ये आइस है, ये आइस सेल्फ बन रहा है, फिर ये स्नो है, आइस सीट बन रहा है लैंड के ऊपर। ठीक है। तो इंटायर दिस थिंग्स, ठीक है, इंटायर दिस थिंग्स बेसिकली क्रायोस्फेयर में अगर हम देखें कि क्रायोस्फेयर में ये सारी चीजें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, तो इसमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। ठीक है। तो क्रायोस्फेयर क्या है, लैंड के ऊपर में जो बर्फ जम जा रही है, द फ्रोजन पार्ट ओवर द प्लान फ्रोजन पार्ट ऑफ द प्लैनेट, दैट इज कॉल्ड द क्रायोस्फेयर। ठीक है। फ्रोजन पार्ट ऑफ द प्लैनेट। सो क्रायोस्फेयर का क्या रोल है हम ये भी देखेंगे। ठीक है। बट उससे पहले ये न्यूज में क्यों था, पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखो, द स्टेट ऑफ द क्रायोस्फेयर 2022 डिग्री इज टू हाई report was released by the International Cryosphere Climate Change Initiative ICCI। ठीक है। ICCI क्या है, a network of expert and researchers working with the government and organization to preserve the earth cryosphere. So ICCI program target the climate dynamic of cryosphere, focuses on the global implication of the cryosphere warming। ठीक है। हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट क्या है देख लेते हैं। नियरली ऑल ट्रॉपिकल ग्लेशियर, मोस्ट मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर एंड पोलर रीजन विल डिसअपियर इवन इफ द टेम्परेचर राइजेस 2 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा होता है 2 डिग्री सेल्सियस राइज करता है तो क्या होगा, ऑल ट्रॉपिकल, नियरली ऑल ट्रॉपिकल ग्लेशियर, मोस्ट मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर एंड द पॉपुलर रीजन विल डिसअपियर। ठीक है, ये हो सकता है। हिमालय एक्सपेक्टेड टू लूज 50% ऑफ today's ice of global average temperature touch 2 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 डिग्री सेल्सियस टच कर जाएगा तो हिमालय का एक्सपेक्टेड है कि 50% वो लूज कर जाएगा उसका बर्फ। ठीक है, पिघल जाएगा। सो द लास्ट डिकेड विटनेस द 7 वर्स्ट ईयर ऑफ द आइस लॉस। अगर क्रायोस्फीयर देखे तो बेसिकली ये फ्रोजन पार्ट ऑफ द प्लैनेट, जो प्लैनेट के ऊपर फ्रोजन पार्ट ऑफ द आइस होता है उसी को कहते हैं। क्रायोस्फीयर रोल इन क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट क्या है, देखिए ये क्या करता है, क्रायोस्फीयर जो जमा हुआ आइस है
प्लेनेट के ऊपर, वो क्या रोल प्ले करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? बिकॉज इट हेल्प टू रेगुलेट द अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू इट्स हाई एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो इज द फंक्शन ऑफ लाइट दैट सरफेस रिफ्लेक्ट्स, वी नो दैट। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। स्टोर द कार्बन, ये कार्बन भी स्टोर करता है। परमाफॉरेस्ट दैट हैज ट्रैप टोन ऑफ कार्बन इनसाइड इट्स सॉइल। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी कंटेन्स 80% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, आइस शीट एक्सेट्रा। Ice melt in cryosphere causes the extreme weather event and sea level rise. इंडिया इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट क्रायोस्फीयर, क्या क्या इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है क्रायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करने के लिए? फर्स्ट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ हिमालयन ग्लाइकोलॉजी इन वाडिया इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। तो ये सारे इनिशिएटिव इंडिया के थ्रू लिए गए हैं इसको सेव करने के लिए। ठीक है, यहाँ हमें समझ आ गया क्रायोस्फीयर से रिलेटेड चीजें क्या है। 2 डिग्री सेल्सियस से रिलेटेड, इसका कीवर्ड है हमारा 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से अगर आगे बढ़ जाते हैं तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। उसी को प्रोटेक्ट करके रखना है, टेम्परेचर को 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ाना है, क्रायोस्फीयर उससे ज्यादा नहीं पिघलेगा। ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आइस मेल्ट इन द वेस्ट एंटार्क्टिका। वेस्ट एंटार्क्टिका में आइस मेल्ट हुआ है, ये नोटिस किया गया है। ठीक है, accelerated ice melt was noticed in West Antarctica through various study and computer simulation. और क्या आया है इससे रिलेटेड न्यूज में? न्यूज में आया है कि वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट if completely lost could contribute to sea level rise up to 5 मीटर। खत्म हो गया तो सी लेवल 5 मीटर बढ़ जाएगा। Ocean driven melting of floating ice slabs in Amundsen Sea is the main process contributing to sea level rise. So the Amundsen Sea is located off coast of West Antarctica. Sequence of ice melt कैसे हो रहा है दिखाएंगे इसको। Melting cows that retreat of the grounding line, ठीक है, reduce the resistance of the ice flowing across the ground line. Faster flow near the grounding line cause a more horizontal stretching leading to the thinning. It creates a steeper surface slope which increases the stress that drive the ice forward. The faster flow inland causes the thinning of process even further into the interior of the ice sheet, increasing the contribution of the sea level rise. ठीक है, ग्लोबल एफर्ट क्या हो रहा है सेव करने के लिए, वो यहाँ पास आपको लिखा हुआ है। ये आपके मीन्स का पॉइंट बन सकता है, काफी अच्छा, इसको आप देख सकते हैं। इंडिया ने इसको बचाने के लिए कौन कौन से मिशन या प्रोग्राम बनाए हैं, उस प्रोग्राम को अगर हम देखना चाहें तो वो यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे मैत्री एंड भारतीय आर फुली ऑपरेशनल है अभी। ठीक है, सो इसमें इंडिया ने जो किया है, इंडिया अंटार्कटिक प्रोग्राम उन्होंने इंडिया ने बनाया है और उस पर काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो क्यों ये न्यूज में है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन? आर्टिक एम्प्लीफिकेशन बेसिकली अगर आप समझो तो दिस इज द डायनेमिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना, डायनेमिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हो